अस्सलाम वालेकुम। सुपर मैंगोज की एक और एपिसोड में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपकी मुलाकात किससे करा रहे हैं? हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं और वेरी यंग एंड एनर्जेटिक, सुपर एनर्जेटिक कहा जाए तो गलत नहीं होगा, समर खान से। हमारी एडवेंचर एथलीट है पाकिस्तान की। समर से हम बात करेंगे और समर की जो अचीवमेंट है, समर की जो जर्नी है, उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन ये बताएं कि कोई भी औरत या लड़की जब एक शहरी इलाके से आती है, हमारे लिए जैसे आई बिलोंग टू कराची, कुछ चीजें करना बहरहाल आसान होता है। समर का ताल्लुक दीर से है, जो कि एक ट्रेडिशनल सोसाइटी है पाकिस्तान की, जहां लड़कियां पढ़ती तो है लेकिन मेजोरिटी उनकी शादी करती है और अपने घर चलाती है। अब से कुछ अरसे पहले तक दीर में कोई यूनिवर्सिटी भी नहीं थी कि जहाँ पे खवातीन जाके तालीम हासिल कर सकती। अब वहां पर यूनिवर्सिटीज हैं, खवातीन जा रही हैं, लेकिन उनके पर्दे का खास ख्याल रखा जाता है। एक ऐसे माहौल में समर ने एक ऐसी फील्ड का इंतखाब किया अपने लिए कि जो कि बड़ी अछूती है, बड़ी अलग और अनोखी अनोखी है, और समर उसमें अपना नाम बना रही है। कैसी रही समर की जर्नी, इस पर हम बात करेंगे। और अभी क्या कर रही हैं, आगे क्या एस्पिरेशंस है, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। समर, आपको सुपर मैंगोज में खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। समर, आई एम सो एक्साइटेड टू टॉक टू यू टुडे बिकॉज आई हैव बीन फॉलोइंग यू ऑन ट्विटर। मैंने रिसेंटली आपके यूट्यूब वीडियोस भी देखी हैं, तो वेरी इंस्पिरेशनल जर्नी आई मस्ट से। एंड जहां मैं बात करूं कि मैंने टेलीविजन एंकरिंग की बहुत अरसे तक, पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया, मगर मैंने अपना बचपन आई थिंक गुड़ियों के साथ खेलते हुए ही गुजारा है। आपके साथ कुछ मुख्तलिफ था? यू द सेम किड? I know I was very tomboyish type of person, very ambitious, active, always running here and there. Though my family values were very different, and I can say contradicting towards my personality. So मैं शुरू से I was very curious about different things. The things I used to see, especially मैं सिर्फ sports, एक जो टीवी चैनल हमारा आता था उसमें हम यूरोपियन एथलीट्स या अंग्रेजों को देखते थे स्पोर्ट्स करते हैं, स्पेशली ऑल द एडवेंचर एक्शन स्पोर्ट्स, ओलंपिक्स आता था उसमें। सो दैट्स हाउ। एंड स्कूल में जो स्पोर्ट्स करते थे उसमें मैं बहुत एक्टिव थी। भाई की साइकिल थी, वो मैं बचपन में चलाती थी घर के ऊपर छत पे। तो बट माय पेरेंट्स ऑलवेज वांटेड मी टू फोकस ऑन माय एजुकेशन, टू work on my career goals, and I too also wanted to end up as a researcher or as a physicist because my education background applied physics hai. And as I knew that any outdoor field or sports or any art field, manly field is not for me and I cannot do it, and there's not a single woman to look up to in my province even. तो ये चीजें मुझे बहुत आउट ऑफ द रीच लगती थी कि बस ये कुछ स्पेसिफिक क्लास के लोग हैं, ये उनके लिए है जो हम सुनते थे या देखते थे। बट विद टाइम जब मेरे एक पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ ड्यूरिंग माय सेमेस्टर ब्रेक, एक पैराग्लाइडिंग कोर्स के लिए मैं गई। इट वाज कंडक्टेड बाय पाकिस्तान आर्मी, एक सिविलियन कोर्स था। वहाँ एक हफ्ता मैं रही विद डिफरेंट ट्रेनर्स एंड एथलीट्स। तो फिर मुझे मेरे काफी क्वेश्चन आंसर हुए, मेरे काफी परसेप्शन मेरा चेंज हुआ टुवर्ड्स स्पोर्ट्स। एंड जब मैंने खुद 2-3 पैराग्लाइडिंग की फ्लाइट्स ली, दे और सोलो फ्लाइट्स, एंड आई वाज फ्लाइंग इन द स्काईज, वो बहुत नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए। एंड आई गॉट लाइक यू कैन से इट वाज द फर्स्ट स्टेप ऑफ माइन इन एडवेंचर स्पोर्ट्स। दुनिया को अलग तरीके से देखने का मौका मिल रहा है। बट समर, अगर मैं बहुत पढ़ता हुआ फिर आपको पीछे लेकर जाना चाहूंगी। मुझे कुछ अपने घर के बारे में बताइए, भाई बहनों के बारे में बताइए। वर यू द यंगेस्ट? क्योंकि उमूमन ये होता है कि फैमिलीज में जो छोटा बच्चा होता है ना, उस तक आते आते पेरेंट्स बड़े बेचारे नरम पड़ जाते हैं, कहते हैं करो जो करना है। तो वाज इट द केस विद यू? और फिर दीर से इस्लामाबाद मूव हुई आप, ये कैसे हुआ? पढ़ाई के लिए हुआ? पेरेंट्स वर सपोर्टिव कि जाओ पढ़ो और कुछ बनो? No, we moved towards my father because of my father's job and also our education. So with time, my family and my parents, they also grew mentally, and they realized that now our children, our kids, they cannot survive in village and in that environment. उनको खुद भी एक्सपोजर हुआ, हमें भी हुआ, लेकिन दो वी हैड टू स्टिक टू आवर फैमिली वैल्यूज एंड कल्चर, क्योंकि जिस तरह हमारा ब्रॉटअप हुआ था फ्रॉम द स्टार्ट। एंड इवन in my family, I'm at second place. Like I have an older sister, she's married, then it's me and then my younger brothers.
So I had the responsibility to look after my family, especially after the death of my father. So I had to, quit my education, do jobs, and survive. And I found myself a scholarship, luckily, after a few years of struggle, and then it helped me a lot. फिर जब मैंने दोबारा एजुकेशन परस्यू की तो उसी के बीच में ऑन एंड ऑफ जब आफ्टर दिस एडवेंचर कोर्स मैंने हल्की फुल्की स्पोर्ट्स एक्टिविटी स्टार्ट किया, स्टार्टेड साइकिलिंग इन द कैपिटल, small hikes, and इस तरह की community मिलती रही मुझसे. And then I realized it's really liberating to ride anywhere on bicycle, and that too without any fuel or without any, because I couldn't afford luxury transport and traveling from one place to another. So cycling helped me a lot in exploring such places. It's wonderful. आप मुझे लगता है जो महसूस हो रहा है वो ये कि आप हमेशा से हसलर रही हैं. एंड अ पर्सन, जैसे कि आपने बताया कि फादर की डेथ के बाद आपको अपना घर भी एक तरह से संभालना पड़ा. उमूमन ये होता है कि जब हम इन चीजों में फंस जाते हैं, वो जब हम अपनी फैमिली की सरबराह की हैसियत ले लेते हैं तो हम उन्हीं कामों में फंस के रह जाते हैं. बट यू केप्ट ऑन, देयर वाज अ योर कॉलिंग कि आप उसको परस्यू करती रही, चाहे छोटी बुनियाद पे. ऑल्सो टेल मी, पहली दफा साइकिल कब हाथ आई थी, कब चलाई थी? आफ्टर चाइल्डहुड, अभी यूनिवर्सिटी में, हाँ यूनिवर्सिटी के बिल्कुल लास्ट में मेरी डिग्री एंड हो गई थी ऑलमोस्ट. तो इस्लामाबाद में ये आगे पीछे छोटी मोटी शॉप्स, वहाँ पे 200-300 में आपको साइकिल मिलती है 2-3 घंटे के लिए. तो वहां से कभी रेंट की, वहां से चलाई. एंड जब मैंने इतने साल बाद दोबारा साइकिल चलाई तो मेरा एक बैलेंस भी गड़बड़ हुआ था, वो मुझे दोबारा ठीक करना पड़ा. एंड देन आई हैड the biggest fear was the traffic, road fear जो होता है किसी भी लड़की को, like how to manage riding and bicycle in heavy traffic, like where to ride, यहाँ पे तो or right. अलग लेन नहीं होती साइक्लिस्ट के लिए कोई. यहाँ पे लेन भी नहीं थी, तो शुरू में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई. सिटी इतनी हैवी ट्रैफिक, स्पेशली पिंडी इस्लामाबाद की, कमेटी चौक, मरी रोड, अक्सर मैं यहीं से पिंडी इस्लामाबाद के बीच में साइकिल चलाती हूँ. तो शुरू में मेरे बहुत एक्सीडेंट्स भी हुए. कभी रिक्शा वाले मार देते थे, कभी कोई लोकल ट्रांसपोर्ट मार देते. मतलब दे इवन don't consider cyclists as riders. मतलब they don't think they deserve road. So they always है जैसे हाँ वो हॉर्न देते रहते हैं to push us aside. So it's with time I started claiming my space on the road, and I became very aggressive and confident at the same time that no, it's also mine and I have to ride on this. तब तो मैं बहुत मजे से आराम से चला रही होती हूँ. अच्छा समर, लेकिन इस्लामाबाद तो एक अच्छा खासा कहना चाहिए कि पॉश शहर है पाकिस्तान का, जहाँ डिप्लोमेट्स भी पाए जाते हैं और पाकिस्तान की क्रीम और रूजू वहाँ पे मौजूद होते हैं. बट एट द सेम टाइम अ गर्ल बाइकिंग ऑन द रोड, harassment का सामना रहा? Harassment in all of my sports years, like it's been 5 years I'm doing sports. So what I have experienced, that harassment is everywhere and it can be happened anywhere, unexpectedly, because it depends on person to person, their grooming, their mentality towards women on bicycle. So ऐसी जगहों पे भी हुई है जहाँ मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी. और मेन पिंडी इस्लामाबाद में आते जाते ट्रैफिक बीच में तो कई दफा हुई है. कैट कॉलिंग इज वेरी नॉर्मल, स्टेयर्स इज वेरी नॉर्मल. Then at the same time you also get thumbs up from educated people who appreciate such activities. Amazing. So it's like a mixed type of response. But yeah, I had like 3 to 4 harassment incidents on the road in which I had to fight physically. बट कभी आपको ये ख्याल नहीं आया कि ये कैसी फील है कि जहाँ पे इस मुल्क में कुछ नहीं किया जा सकता और मैं से जान छुड़ाऊं, बिकॉज देयर आर पीपल कॉन्स्टेंटली कॉलिंग इट एक ऐसा शौक जिसका कोई फायदा नहीं है, जिसमें लड़कियां नहीं होती, उन्हें होना ही नहीं चाहिए. स्पेशली लड़कियों के लिए बहुत डिस्करेजिंग होता है स्टार्ट में. इट्स रियली रियली डिस्करेजिंग. और यही वो टाइम होता है when most of the girls they quit going outside and traveling on their own on scooties and motorbikes and bicycle. But I knew that I cannot stop, and it's me with many other girls who have to become resilient and who have to set this culture and who have to claim our space. क्योंकि अगर वो 1 महीना देखेंगे लड़कियों को साइकिल चलाते हुए, 2 महीने, 3 महीने, 1 साल, 2 साल, तो it will be normalized. And how to normalize this culture, to do it more.
even having harassments and facing it and overcoming it, but we have to pave the way for others to come. And you have to pay a price for that as well, but definitely you're paving the way. अच्छा समर, उसके बाद ना you moved on to, आपने पैराग्लाइडिंग का तो जिक्र कर दिया, माउंटेन बाइकिंग कैसे शुरू की, उसके बाद you became a trekker, climber, skier, snowboarder. How did that all happen? My very first trip was from Islamabad to highest international border, Pakistan and China, and it's almost about 4,693 meters. Yeah, if I'm not wrong. So 4,500 की height पे तो सिर्फ हमारा international border है, and it really fascinated me to go towards Hunza, explore it on two wheels. So it was a 10 days expedition almost, and उस expedition में मैंने बहुत कुछ सीखा कि cycling it's not an easy thing कि आप बस शौक में साइकिल उठाएं और घर से चल पड़े. आपको प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए, आपको प्रॉपर गियर्स चाहिए, आपको डूज एंड डोंट्स पता हो, पूरा आपका ट्रिप प्लान हो कि आपने पर डे कितने किलोमीटर साइकिलिंग करनी है, स्टे कहाँ करना है, और व्हाट आर द आइडियल टाइमिंग्स जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. सो मोस्टली मैं फजर टू मगरिब, मतलब अंधेरे से पहले मैं अपनी राइड एंड कर लेती थी. एंड देन आल्सो आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड विद द मैजेस्टिक पीक्स एंड माउंटेन रेंजेस ऑफ पाकिस्तान, एंड देन आई रियलाइज्ड कि हमारे पास तो इतना बड़ा नेचुरल एसेट्स एंड इट्स देयर एंड इट्स अनटैप्ड एंड वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग एट ऑल. जैसे हम वेस्टर्न कंट्रीज में देखते हैं, देयर आर अ लॉट ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, इवन दो कि उनके पास इतने कोई खास हेवी माउंटेन रेंजेस नहीं है. Like we have landmarks, we have K2, we have third largest polar glacier, we have a very diverse landscape, deep sea port, a lot of things can be done on it. Then in my next expedition I planned कि I should bike on a landmark जिसका किसी को पता भी ना हो, and जिससे एक नया thought process शुरू हो कि yes, adventure sports can be done in Pakistan and also can be done by Pakistani women. Okay, so what did you do? I planned and I researched and I found something, and then I went there. दो के पहले कोई climbers जो porters जो आप team hire करते हैं वो मेरे साथ जा नहीं रहे थे, and they were laughing at me कि अच्छा वहाँ तो hike कितने मुश्किल से होती है, we cannot walk, आप cycle लेके जा रही हैं. फिर मैंने कहा नहीं, मुझे try करना है and I want to see. So I spent like good 2 to 3 weeks on ice. I stayed on ice. I trekked on ice. I bicycled on ice. Where did you do all? It was across Kardu. When you go towards K2, तो वहाँ पे glaciers शुरू हो जाते हैं. Okay. So it's the third largest non-polar glacier, and the part where I biked, it's called Biafo Glacier. और मैं जिस height तक गई थी, that was 4,500 meters. जिस height पे दूसरी countries में peaks होती हैं, उस height पे हमारा glacier है और हमारे borders हैं. So it was very challenging expedition, and very first time I got introduced to glaciers, and very very uncertain and risky situation. कभी भी किसी time कहीं भी landsliding हो सकती है, किसी भी crevice पे आपको jump करना पड़ सकता है, that too with your luggage, fuel, food and camps and bicycle. And so I learned a lot, and when I came out, I was totally a different person. I have seen that video. It is very impressive. But again, मैं फिर थोड़ा सा पहले यहाँ पे लाऊंगी कि इतना daunting task आपने लिया, and I think that needs a lot of training. I think you have come a long way in 5 years. इतना कुछ achieve कर लिया है in 5 सालों में. I thought कि पता नहीं आप 15 साल की उम्र से train कर रही होंगी शायद. But how did you actually train for that climate, for climbing, breathing techniques? क्या नहीं चाहिए होता है उसके लिए? तो how did you manage? कोई एक ऐसा लम्हा आया जहाँ आपने सोचा हो कि कहाँ फंसा लिया मैंने अपने आप को? मैं तो अपनी रोजाना की जिंदगी में सोचती हूँ यार कहाँ फंसा लिया अपने आप को. नहीं, ये होता है. मेरे पहले ट्रिप से मैंने बहुत कुछ सीखा था. मुझे जब क्रैम्प्स आए थे, वो सिकनेस से मुझे बाइक करना पड़ गया था और मेरी टांगे काफी जगहों पे जवाब दे गई थी. तो मुझे रियलाइज है कि मुझे ट्रेनिंग चाहिए और मुझे अच्छा इक्विपमेंट चाहिए, मुझे अच्छे गियर्स चाहिए. सो देन इंटरनेट हेल्प मी अ लॉट, नो डाउट, क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान में इतने कोई हाई फाई कोचेस तो होते नहीं, और माउंटेन बाइकिंग की तो फील्ड या कोई एसोसिएशन और टीम भी नहीं है. So all I had was internet, international athletes and their pages and profiles to follow and study. तो फिर मैंने जिम ज्वाइन किया प्रॉपर्ली, मैंने कुछ महीने ट्रेनिंग की, एंड आई designed my own nutrition plan, my own hiking routine, my own cycling routine कि मुझे कैसे अपने legs को strengthen करना है या stamina improve करना है with weights, without weights. So basically you did everything without a professional coach. You did it yourself.
Yeah. Amazing. एंड देन ऑल्सो मैंने पूरा एक्सपेडिशन प्लान किया, लोकल जो टीम थी उनसे कांटेक्ट करना, उनको हायर करना, कितने दिन का एक्सपेडिशन है, इन्वायरमेंट के टेम्परेचर मिनिमम कितना होगा, एंड स्टॉर्म्स होंगे नहीं होंगे, सो वो सारा कुछ प्लान करके प्रॉपर एक देन आपके पास वेदर कैंप स्टैंड्स, वेदर इक्विपमेंट होता है विच इज कोल्ड प्रूफ एंड रेन प्रूफ, बट स्टिल आप जितना मर्जी प्लान कर लें, कुछ चीजें आउटडोर पे डिपेंड करती हैं, वो आप प्लान नहीं कर सकते हैं. So we had a lot of accidents. We had very uncertain situations. जहाँ पे हमने sudden decisions लेने थे, and then there were very weather challenging क्योंकि weather is really unpredictable in north. वहाँ पे काफी चीजें मैंने और भी सीखी कि international athletes जितने भी आते हैं, वहाँ के लोकल क्लाइंबर्स या पोर्टर्स ज्यादातर इंटरनेशनल टीम्स को लेके जाते थे, तो उनके माइंड में पाकिस्तानी खवातीन को लेके बहुत एक कमजोर सा इमेज था कि ये तो बड़ी फ्रेजाइल होंगी, यहाँ पे बर्डन बनेगी, या तो ये तो चल ही नहीं सकेंगे ग्लेशियर पे. सो ज्यादातर रेजिस्ट करते थे शुरू में उनको ऐसे एक्सपीडिशन को लेना, विच वाज लेड बाय पाकिस्तानी वुमेन. Then in 4 men, I was the only girl, and I had to prove myself that I can carry my bike, I can walk as fast as you can, even in injuries, I'm not scared on heights. बिल्कुल इतना ट्रैक होता था जिसमें हम चल रहे होते थे, यहाँ खाई होती थी, यहाँ पहाड़. जब मैं बाहर निकली तो उन्होंने भी काफी अप्रिशिएट किया कि you have changed our perception towards Pakistani women, क्योंकि एडवेंचर स्पोर्ट्स में या माउंटेनियरिंग या क्लाइंबिंग में 4-5 साल पहले बहुत कम खवातीन थी. एक हम समीना बेग को जानते थे जो माउंटेनियरिंग में आए, बट विद टाइम थिंग्स स्टार्टेड टू चेंज. फिर बीच में सोशल मीडिया वो बहुत एक it was the biggest support. It became the biggest support for athletes because we had the platform finally to showcase our work, to share our efforts with the world, and that to tell people, and especially Pakistani community, about adventure sports. So, Samar, at the same time, adventure athletics या sports जो है कोई एक सस्ता शौक नहीं है. Photos hire करना, trips plan करना, weather gadgets, अपनी जो है equipment सारा. How do you finance everything? Do you get sponsors? क्योंकि बाहर से जो लोग आते हैं उनके पास तो बड़ी sponsorships होती हैं. मेरी शुरू में 2-3 साल मेरे बहुत टफ गुजरे. सो बिकॉज आई हैड नो आंसर टू दिस क्वेश्चन कि पैसे कहाँ से कमाओगी, क्योंकि पाकिस्तान में जितने भी स्पोर्ट्स हैं, besides cricket, जितने भी स्पोर्ट्स है, they don't get monthly salaries and good funds and coaching and nutrition and all the facilities. सारे एथलीट्स को खुद मैनेज करना पड़ता है. So initially I had to develop my own skills कि मैं स्टूडेंट्स को ट्रेन कर सकूं in sports as a coach, छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स पकड़ सकूं. It involved documentary series, teaching someone, training a group in cycling जितना मुझे आता था. So with time, I focused on growing my own skills, especially around mountain sports and outdoor sports. And then मुझे छोटे मोटे with time, जैसे मेरी achievements बढ़ती गई, I got approached by people and brands. And now, alhamdulillah, I'm finally on board permanently on a contract basis with Top City One as my permanent sponsors. और अब थोड़ा बहुत ब्रांड्स और कंपनीज को समझ में आने लगा है एथलीट्स के बारे में, एंड दे आर नाउ टेकिंग देम एज स्पोर्ट्स एम्बेसडर्स एंड स्पोर्ट्स रिप्रेजेंटेटिव्स. सो टू कॉम्प्लीमेंट देयर हार्ड वर्क एंड on invest like as an investment on in sports industry, ये बहुत कम एथलीट्स को ये फैसिलिटी मिल रही है, या who are able to go big, जिन्होंने अपना सोशल मीडिया पे एक आइडेंटिटी बनाई है, and they are becoming brand now. लेकिन still we need a lot of work on sports and building a sports industry, क्योंकि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स की हर एक्सपेक्टेशन एथलीट्स रखी जाती है. And you yourself know कि आप दूसरी कंट्रीज में अगर आप देखें तो there is an entire industry comprising on sports brands, sports managers, sports lawyers, sports doctors, sports psychiatrists, sports coaches, like पूरा infrastructure है. And we need to build that infrastructure from scratch. अभी तो हम खुद ही wholesale हैं. Samar, so you said कि finally, you got an association where you were able to actually mentor new people who are interested in this and train them. तो मुझे बताइए, how is the response? एक तो ये कि are girls coming up, for adventure sports? दूसरा, when guys come, what is their reaction when they come to know कि भाई हमें एक खातून से train होना है? Do they trust you?
So I'm really blessed for few opportunities. I got selected in the biggest training program by ESPNW. It was in United States, and that was the huge opportunity of my life to get trained by the top-notch sports executives and sports coaches and sports journalists. So there was a whole industry there for us, for the selected participants, ताकि वो उन्हें सिखाए, क्योंकि उन्हें पता था हम developing countries से जा रहे हैं. And when I came back to Pakistan, I launched my own sports initiative. It's called Summer Camp, in which I totally promote and do adventure sports. Mountain biking camps भी होते हैं, snowboarding activities भी होती हैं. तो शुरू में तो मुझे बहुत क्रिटिसिज्म सुनने को मिलता था कि इसकी अपनी क्या स्किल्स हैं या इसको खुद क्या आता है, स्पेशली फ्रॉम ऑपोजिट जेंडर. But now, after 5-6 years, they like my sports. It has been accepted. My profile, my work has been accepted and acknowledged on a lot of platforms, thankfully. So now they really respect me, both male and females, and especially जो mothers होती हैं, वो बहुत ज़्यादा conscious होती हैं to train their daughters in outdoor activities. And वो मुझे अक्सर कहती हैं कि हम चाहते हैं हमारी बेटियां आपकी तरह बहादुर हों और strong हों और उनमें उतनी ही resilience आए. So they don't, वो क्योंकि एक जो image बना हुआ है खातून के कि they should be fragile and weak, and they're supposed to be weak and fragile. So a lot of women, especially now, they want to change it for their next generations and for their daughters and sisters. So do you think, Samar, जैसे हर फील्ड में होता है, मैं भी अपनी फील्ड में कहूंगी कि शायद मुझे अपने मर्द काउंटर पार्ट के मुकाबले में ज्यादा मेहनत करनी पड़ी अपने आप को मनवाने के लिए. हाँ, यहाँ पे तो फिजिकल ट्रेनिंग बहुत इन्वॉल्व है आपकी फील्ड में, तो आई थिंक अ गाय हैज टू ट्रेन इनफ to be successful, and so do you. मगर do you think कि mental war में या mental capabilities में आपको एक मर्द से ज्यादा जो किस फील्ड में होगा ज्यादा strong होना पड़ता है? हमें बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है. हमारे लिए फिर सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग चैलेंज नहीं होती, हमारे लिए भी चैलेंज होता है कि हम ट्रेनिंग पे जा रहे हैं तो हमने क्या ऐसा पहनना है जिसमें हम कम अट्रैक्शन लोगों की वो करें, हरासमेंट जिसमें कम हो, कि ऐसी जगह पे जा जो हमारे लिए सेफ हो, और अगर हमारे साथ कुछ होता भी है तो हाउ टू डील विद इट. And then how to maintain the confidence of our families ki yes hum females and we are going outdoors and we are going out, we are working alone, but we are safe. Yeah. So and then जो चीजें लड़कों को बहुत आराम से शायद मिल जाती होगी, वो किसी भी जगह जाके मीटिंग कर लेते हैं, प्रपोजल दे देते हैं. हमें प्रपोजल या प्रोजेक्ट के बदले में अक्सर ये भी सुनने को मिलता है कि ठीक है, वी विल गिव यू दैट, बट व्हाई डोंट यू कम टू आवर अपार्टमेंट एंड लेट्स हैव अ डिनर टुगेदर, cheap offers in exchange. So because we are women, so they think okay ye majboor honge and we can buy them with different offers. So and the harassment not only comes from general public, चलो उनके लिए तो नई चीज है ना स्पोर्ट्स वुमेन को देखना या किसी भी ऐसी एक्टिविटी स्पेसिफिक लोगों से भी. But how about the people staying and working in authoritative positions, in decision-making positions, and when they do it with you, so you cannot fight with everyone on every level, because then you don't have the power like them, you don't have the money like them, and you don't want your sports to go because of some people. So कभी-कभी आपको compromise करने पड़ जाते हैं, कभी-कभी आपको खामोश भी रहना पड़ जाता है. So it's very different from for a male athlete and for a female athlete, or for the sake of argument किसी भी आप profession में देख लें, it's very very different for a woman. सही. तो कैन वी से, आई डोंट नो, शायद आपको वियर्ड लगे मगर शायद आप मेरी बात से इत्तेफाक भी कर जाएं कि इट्स मेल डोमिनेटेड फील्ड, बट डू यू थिंक कि आपको एक्स्ट्रा मेहनत तो जाहिर सी बात है आपने पूरा जिक्र किया करनी ही पड़ती है, बट इन अ मेल डोमिनेटेड फील्ड लाइक दिस यू हैव टू प्रिटेंड लाइक अ गाय, एक्ट लाइक अ गाय, ड्रेस लाइक अ गाय, एंड टू शो कि आप इम्यून हैं बहुत सारे रिएक्शन से जो आप लोगों से फेस करती हैं. डज इट एक्चुअली हैपन? डू यू फील कभी ऐसा महसूस होता है? We have to develop a very very strong character, क्योंकि females के साथ, ख़वातीन के साथ, especially जो ऐसे odd manly field में where we have to work directly with men, even in remote regions, जब कभी अकेले भी होते कि 10 लोगों के in 10 males and 15 males you are the only one. So you have to build a very strong character. You have to make your body language really strong, and I'm not an easy target, and even if something happens, how to fight it.
And then so jitni bhi khawateen hai, like a lot of sportswomen in Pakistan who are working in the industry, in the sports industry, who are pushing every day, ye jo kuch achieve bhi kar rahi hai, they are the most resilient version of women, because they don't quit. They cry it off in their homes, but next day they're again on the field. There is voice on social media, not only for them but also for a lot of girls around, and they push the people and politicians to bring such policies which can improve the practice playgrounds for females and for other women, कि उनके लिए in safe environment हम ला सकें. Absolutely. So we are not only fighting for ourselves, but a lot, for a whole lot of community. अच्छा Samar, we're coming towards an end, मगर मुझे 2 सवाल अभी भी आपसे पूछना है. I came across a tweet of yours where you said कि as an adventure athlete, you realize that it is a lonely journey. Why do you say that? One, you can see a lot of infrastructure, a lot of games, a lot of championships, a lot of participation of athletes who are in conventional sports. They are there from years, swimmers, badminton players, tennis players, squash players, cricketers. So they belong to conventional sports. But when you talk about adventure sports, there is no federation, no association, no high achiever. Like the biggest platform of a conventional sports is Olympics. But the biggest platform for an adventure sports or adventure athlete is X Games. And you can not name a single Pakistani in X Games. And even from any Asian country, like there's hardly an example. And especially in mountain biking, snowboarding, both of these sports are Western sports. And जब मैंने snowboarding भी तभी start की जब मुझे US में आते वापसी पर एक पूरा snowboarding kit मिला था from Burton Snowboards. They were my mentors and I got lucky to be there. Lekin we don't have skis and snowboards in Pakistan. We don't have a local bicycling shop in Pakistan. Everything will be imported from outside by millions of dollars, and not everybody gets sponsors. So it is a lonely journey where you have to, manage, find your proposal, search for it, then train yourself, then share your work, then work for equal media projection to share your work, and then sustain all the criticism and all the online bullying on, the street harassment, and still continue your work. And you cannot quit, because there are hundreds of women, young girls looking up to you. I receive a lot of messages on and off. And even when I'm very, very down, there would be some message from some girl in a very remote area from Sindh or KP or, Balochistan. तो वो messages पढ़ के फिर मैं खुद बहुत motivate हो जाती हूँ कि no, my work is not useless. Even though I'm shedding my blood and sweat in the mountains where nobody can see it, but a lot of girls want to do this. So there will be a day when there will be a platform, and it might be my platform which will help them. Perfect. तो समर अब मेरे पास गुंजाइश आखिरी सवाल की, लेकिन मेरे दिमाग में एक और सवाल कुल बुला रहा है. I have to merge them both. एक तो एक जैसे आपने Biafo Glacier climb भी किया, then you rode down with your bike. तो एक खतरनाक काम है. And I'm sure कि एक चीज अचीव कर लेने के बाद अब next target एक adventure athlete का होता है कि अब next इससे ज्यादा खतरनाक कोई काम होगा या इससे आगे का कोई काम होगा. तो डर नहीं लगता कि ये जानलेवा भी कभी खुदा न खास्ता साबित हो सकता है. Second and last point is कि what are your dreams? जैसे कि आपने कहा कि now girls from remote areas are looking up to you. तो समर के personal dreams भी हैं, और समर का कोई और dream भी है जो पाकिस्तान की ऐसी लड़कियां जो कि ऐसी ख्वाहिश रखती हैं, जो कि दीर से, चित्राल से, या सिंध के किसी रिमोट, या पंजाब के किसी, बलोचिस्तान के किसी रिमोट गांव से आना चाहती हो, उनके लिए कुछ करना चाहती हैं. So what do you want to say about that? Adventure sports पे जो भी आना चाहते हैं मैं उन्हें यही कहती हूँ कि it's a dangerous sport, and you will face life death situations very often on and off, and that's why it's really, really different and appealing from other sports. Or my future goal is to
participate and represent Pakistan in adventure sports competitions and events as an adventure athlete, and also grow my club and take all the training camps to different remote areas, different provinces, and extract adventure athletes from different places and build a team and launch this culture in Pakistan, the culture which we see in other countries. Red Bull events to mountain biking ke hote hain, snowboarding ke hote hain, on very dangerous places in a very dangerous style. I want Pakistanis to be participating in that, and bring honor home, and I want to see green flag in such platforms. Thank you very much, Samar Khan, for your time. बहुत खुशी हुई, बहुत inspiration मिली, but I think I'm too old to dream. But I'm so happy to see you there. I want you to achieve more. और पाकिस्तान का नाम आप रोशन करें. बहुत बहुत शुक्रिया आपके time का. Thank you so much. Thank you. Okay, bye.